और अब श्री जयंत चौधरी के सम्मान में यहां प्रशस्ति वाचन करेंगी जया पालीवाल। Shri Jayant Chaudhary, Member of Parliament, Lok Sabha, a leader with a difference, an indefatigable, committed, and a charismatic leader, leader with invariably rich and varied interests ranging from politics, cricket, chess, rifle shooting, music, and arts. Being the son of Chaudhry Ajit Singh, the Union Minister, and the grandson of late Chaudhry Charan Singh, the former Prime Minister of India, sir, you have a magnificent political lineage. Despite the fact that you were born in the USA and studied there, you have done admirably well, remarkably well to be able to relate with the people and establish a dialogue with them. Your election to the 15th Lok Sabha from Mathura in the 2009 general elections is a fair indication of the faith which your people have in you. As a member of the Lok Sabha, you have been a true Jan Pratinidhi and have always been forthcoming in putting the problems of the people in front of the August House. It's really, indeed, a matter of great pride and honor for Myers MIT Group of Institution Pune to confer upon a young and dedicated parliamentarian like you this prestigious Bharat ASMITA Jan Pratinidhi Shrestha Award 2012. Let's put our hands together once again for Shri Jayant Chaudhary. भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार, ताम्रपत्र, स्मृति चिन्ह, 1,25,000 रुपए का कैश अवार्ड और शॉल के साथ MIT पुणे के इस प्रांगण में भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित श्री जयंत चौधरी और उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं, चारू सेन जी। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस युवा सांसद का यहां स्वागत अभिनंदन और भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। और अब भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार श्रेणी, जिसके तहत मास मीडिया के लिए इस बार पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। हमारे साथ यहां जयंत चौधरी हमारे साथ हैं, हमें पहले संबोधित करेंगे और फिर हम अगले पुरस्कार पर चलेंगे। जयंत चौधरी। आपने ठीक पहचाना कि अगर पॉलिटिशियन को माइक दे दोगे तो ये सेरेमनी टाइम पे खत्म नहीं होगी। जी। मैं डॉक्टर विश्वनाथ जी का, उनके बेटे राहुल जी का, जिनसे मेरा पहले संपर्क था, आभार व्यक्त करता हूं। पद्म भूषण श्री माशेलकर जी, डॉक्टर भटकर जी, सिद्धार्थ जी, जिनको मैंने बचपन से देखा है। अभी चर्चा चल रही थी, मैंने सुना राहुल जी ने भी अपने भाषण में बोला। जब मैं उनसे मिला सिद्धार्थ जी से, मैंने यही कहा कि मेरा क्विज मत लीजिएगा बस। और हमारे मुख्यमंत्री सिक्किम प्रदेश के हमारे बीच में हैं श्री पवन कुमार जी, सभी सम्मानित लोग यहाँ जिनको पुरस्कार मिल रहा है, जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने एक पहचान, विशेष पहचान बनाई है, आज यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका नमन करता हूँ। इसी संस्था के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 3rd बैच के एक छात्र मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से मुझे और पता लगा कि संस्था के पीछे क्या विजन है, क्या सोच है और कैसा उनका अनुभव रहा। मैं मानता हूं कि ये संभव नहीं है कि हर एक आदमी चुनाव लड़े। मैं भी नहीं चाहता। मेरे आगे अगर
आप में से इस बैच से लोग निकल के चुनाव लड़ने लगे तो मेरे सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने के लिए आप पार्टी से जुड़ें या चुनाव लड़ें। थिंक टैंक्स के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जो हमारे देश में मैं कमी महसूस करता हूँ, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की संस्थाएं नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग हो। मैं सुन रहा था अभी प्रोफेसर साहब परशुरमन जी बता रहे थे कि किस तरह से कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेम है। पिछले साल एक डेलीगेशन ऑक्सफोर्ड गया था एमपीज़ का, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक एमपीज़ के लिए वहाँ लर्निंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश करें। ऑक्सफोर्ड में भी एक नया स्कूल ऑफ गवर्नमेंट वो प्लान बना रहे हैं, शायद एक आध साल में लॉन्च करेंगे। तो विभिन्न देशों में पहले से ही ये सोच विकसित थी कि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए लोगों को जागरूक करना और जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है आपके बीच में आकर इस संस्था के काम को देखकर कि उस दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। खुशी इस बात को लेकर भी है कि अक्सर लोग राष्ट्रवादी सोच की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि देश तो कहीं ना कहीं किसी सामाजिक क्रांति या युद्ध से बने, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी संस्कृति का है कि हम ये एहसास कि हम सब एक सूत्र में बंधे हैं और मानव इतिहास के अनुभवों से ये संस्कृति बनती है जिसमें हम सब शामिल हैं। ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति कोई स्थायी चीज़ नहीं है। जैसे हमारा समाज दुनिया से आज जुड़ रहा है तो नए विचारों का संचार हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस संस्कृति की विविधताओं का सम्मान करना, ये जो भावना आज की प्रदर्शनी में झलकी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो संस्थापक हैं, संस्था के पीछे जो आज इसको चला रहे हैं, उनके विजन का एक हिस्सा है कि यहाँ के बच्चों को, छात्रों के अंदर वो एक जागरूकता और वो एक सम्मान की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसे देखकर भी मुझे विशेष खुशी हुई। मेरी यात्रा के बारे में एक वीडियो दिखाया गया। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं किया है, शुरुआत हुई है। ये सम्मान मुझे ऐसे वक्त में मिल रहा है कि जब मैं लोकसभा सांसद रहते रहते अपने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि एक नई दिशा प्रदेश में मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि इस पुरस्कार से, इस सम्मान से मुझे संघर्ष करने की, लड़ने की, काम करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत चौधरी। और अब जैसे कि हम कह रहे थे, भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार की हमारी अगली श्रेणी है, जिसके तहत इस बार मास मीडिया के लिए, जन संचार के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जाने माने क्विज मास्टर, कौन बनेगा करोड़पति, पहले, द्वितीय, तृतीय के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ बसु जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम अभिनंदन करेंगे और इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित करेंगे। आप जानते हैं, जाने माने क्विज मास्टर सिद्धार्थ बसु जी के जब प्रोग्राम किया करते थे दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर, तब हम लोग छोटे थे और उनको सुना करते थे और बड़े मुश्किल सवाल ये पूछते थे। उनके जवाब हम लोगों को आते नहीं थे, लेकिन उसी से ही सीख कर, प्रेरणा लेकर बहुत सारे छात्र, बहुत सारे विद्यार्थी आज बहुत आगे आगे गए हैं। मैं जानती हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को जो सिद्धार्थ बसु के कार्यक्रम देखना कभी नहीं भूलते थे। और कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें हम देख रहे हैं कि समाज के ऐसे तबकों और ऐसी जगहों से अनजान लोग आ रहे हैं और करोड़पति का न सिर्फ सपना देख रहे हैं बल्कि उसको हकीकत के रूप में देख रहे हैं। ये सब करिश्मा सिद्धार्थ बसु जी का है। भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार से आज हम उन्हें नवाजेंगे। आइए जरा पहले उन्हीं पर आधारित ये एक छोटा सा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देख लें। तेज भी, तीखा भी और ताबड़तोड़ भी, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति प्रश्नोत्तर पर आधारित एक ऐसा कार्यक्रम रहा है जिसने टेलीविजन के कथाबाह्य कार्यक्रमों के लिए नए मानदंड स्थापित किए हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम के रचयिता है श्री सिद्धार्थ बसु। I'd love to see the bar of entertainment in this country raised. I would love to see it more socially engaged.
I would love it to make much more of a difference than it is at the moment. I would like to see more public service television. प्रश्नोत्तर पर आधारित कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में आपका काफी योगदान रहा है। सन 1985 में दूरदर्शन के क्विज टाइम संचालक के रूप में आप जनता के सामने आए। It's now time to start quizzing in earnest. उसके पश्चात स्पेक्ट्रम, द इंडिया क्विज, मास्टरमाइंड इंडिया, इंडिया चाइल्ड जीनियस जैसे विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का आपने निर्माण किया। सिद्धार्थ बसु की बिग सिनर्जी कंपनी द्वारा निर्मित झलक दिखला जा, आपकी कचहरी किरण के साथ, सच का सामना तथा 10 का दम इत्यादि कार्यक्रम भी सराहनीय रहे हैं। प्रसार माध्यम का उपयोग ज्ञान संवर्धन तथा जन जागृति हेतु करना आपकी विशेषता है। I think I would really like to do more mentoring and teaching and writing. Those are things that excite me, and those are things that I would really like to work towards doing. And step by step, hopefully it will happen in the not too distant future. Very early role models my mother particularly put in front of me was Swami Vivekananda, and his writing was very inspirational and powerful, which stayed in my mind for a long time. सिद्धार्थ जी, भविष्य में भी आप नए मानदंड कायम करते रहें, इसी हार्दिक शुभकामना के साथ हम आपको भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और अब श्री सिद्धार्थ बसु के सम्मान में यहां हम प्रस्तुत करेंगे प्रशस्ति वाचन जया पालीवाल। Thank you. May I have once again a huge round of applause for Mr. Basu. Better. Shri Siddharth Basu, Chairman and Managing Director, Big Synergy Media Limited, a man who has created a history. One of the most original, magnanimous and inimitable quiz masters of Indian television, who is immensely impressive and immensely talented. Sir, you are an absolute delight to watch, music for the ears and treat for the eyes. Your status as a quiz presenter grew rapidly with the programs like India Quiz, the Beanstalk Quiz, Mastermind India, and India's Child Genius. But your masterstroke was undoubtedly Kaun Banega Crorepati, with a veritable Amitabh Bachchan as its host and a format suitable for the Indian viewership. Shri Siddharth Basu, the man who carries a lot of sophistication, style, elegance, panache and dexterity with his impeccable accent and immaculate language. Besides many documentary films, direction of various TV programs and hosting of the programs like Yuva Vani on All India Radio also go to your credit. Today, as a chairman and the managing director of Big Synergy Media Limited, you have created, sir, you have created a niche for yourself in the television infotainment world. For your all contribution in enriching people's life through the medium of television, it gives us great pride and immense pleasure to the Myers MIT Group of Institutions, Pune, to confer upon you this prestigious Bharat Asmita Jan Jagran Shrestha Award 2012. Once again, a big round of applause. श्री सिद्धार्थ बसु को यहाँ भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, ताम्र पत्र, स्मृति चिन्ह, 1,25,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और शॉल और ढेर सारे सम्मान के साथ श्री सिद्धार्थ
बासु। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम श्री सिद्धार्थ बासु का यहां अभिनंदन, स्वागत और राष्ट्रीय अस्मिता पुरस्कार 2012 से यहां सम्मानित कर रहे हैं। और अब हम निवेदन करेंगे श्री सिद्धार्थ बासु जी से कि वो आए और अपने अनुभव हमसे बातें शेयर करें। श्री सिद्धार्थ बासु जी। Humbled and very grateful to the Bharat Asmita Foundation, to all of you, Dr. Mashelkar, Professor Vishwanath Karad, Rahul Karad, all of the illustrious people here on the dais involved with the MIT group of institutions for this appreciation. But I do also believe that really I don't deserve this, because none of this has been a solo effort. Television is a collective enterprise. We have all sorts of creativities and organization which go behind it. And none of these programs could have been made without the synergy of a wonderful group of individuals who came together as a collective and proved the power of a group effort. I believe in synergy, that's why I call our production house Synergy. That the sum is greater than, the whole is greater than the sum of the parts. And I would like to accept this award very humbly on behalf of all of the gifted people and very generous people who've helped me to get here. Television is a very powerful tool. I just want to share a few remarks with you, extempore, on the personal journey and some of the challenges and opportunities and in our medium today. Television is a very powerful medium, as I was saying. It reaches into every home. We are approaching 140 million television households in our country. Unfortunately measured by only 7,000 people meters, a very inadequate dipstick. But its power to influence is immense. And as the great poet W.B. Yeats said, with great power comes great responsibility. And the challenges, as we all know, because it reaches us all, are the challenges of rampant commercialism, the challenges of sensationalism, and the challenges of intolerance. Those are some of the issues which we have to face up to. We have to dedicate ourselves in the medium, those of us who have the great privilege of this powerful tool in our hands, to use it for certain values. For me, very broadly, I think those values we need to commit ourselves to are egalitarianism, inclusion, pluralism, secularism, and a certain compassionate attitude towards our fellow Indians and people who have nothing, who have very little. For a communicator, there have been few greater moments than to see some of the things that we've happened to see on programs like Kaun Banega Crorepati and India's Got Talent, when a group of daily wage workers who barely got, say, 20 rupees a day went on to win a contest like India's Got Talent at the end, with wonderful contemporary aesthetics on challenging themes such as the Ekta of India, on the Darshavatar, on glimpses from the life of Krishna, beautifully interpreted in a way that was state-of-the-art and contemporary. And all they did was till the land, or were masons or brick masons, some way or the other. That was a program we managed to do. A program like Aapki Kacheri, we would find ordinary people, bitterly conflicted, crying out for resolution, coming, and we heard their stories, and in understanding their stories, we understood a little bit of the rights and responsibilities and some of the legalities and how it works and how we can put it to advantage in our lives. And through that, I'm delighted to say that kacheris have sprung up with the National Commission of Women, with initiatives all over the country for certain forum for alternate redressal of disputes. On KBC, as so many of you must have watched, we've made a particular effort in the last 2 years to reach out to the Aam Aadmi and Aurat, for people from the grassroots who haven't had other opportunity, and to see a life changing before your eyes. I think there's
a certain magic in that, and there is certain inspiration to be had from that. Even as the producers of the show, we couldn't but be moved. It was, of course, a knowledge show, but it didn't just appeal to the mind. We hope it also appealed to the heart and sometimes touched the soul. I never thought it would be here, because when I started off, the plan wasn't to do television at all. You know, way back, my father, he didn't normally, once or twice in his life, he met an astrologer, and one astrologer told him, you know, your son is going to be widely known in a very unusual field. And I noticed later he had noted down, I was about 12 years old, he'd noted down nuclear physics, neurosurgery. Nobody knew that somebody could get widely recognized for asking questions and giving answers, or, you know, doing that the competition. I don't think that exists as a sort of career or calling, and that wasn't planned. Thank you. When I was at college in the early 70s at St. Stephen's, later at Hindu and Delhi University, it was a time of great ferment of ideas, a time of revolution. You have Che Guevara, you had the Nakshal movement in our own country. On the other hand, you had psychedelia and Woodstock. It was a time of great ferment, and my great passion was actually theatre. And I was studying literature in college. I did a master's in literature. And I left college full of ideas of wanting to form an alternate commune, an idealistic kind of, you know, where we work and create our own art. The artist's calling, the sense of calling was uppermost in my mind. And we left college with James Joyce's words ringing in my ears. That was from Portrait of the Artist as a Young Man. And the particular line, the closing line of that novel was, "Welcome, O life. I go forth to experience for the millionth time, to encounter for the millionth time the reality of experience, and to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race." That was a big one. But of course, it didn't happen like that. I couldn't make a living of the theater. Today in this country, very few people can actually make a living of the theater. I made documentary films. Actually, first 8 years of my documentary film was on popular science. And the rigor and the discipline and the understanding of that helped a lot. Theater and documentary was one thing, then suddenly, out of the blue, I got to ask questions quite by happenstance, and I got recognized by that. But of course, question marks have dogged me all my life. I'm dying to replace that with exclamation marks, with looking for some answers. We've done a lot of other programs in this time, other than quiz programs. There's talent shows, there's reality shows, there's a show called Foodistan, which is a wonderful celebration of food, the cultures of the subcontinent, and of things coming together, and a whole lot of other shows on the anvil. But in all of this, the effort has been to resist the pressures of commercialism, to sensationalizing things, to entertain, inform, and educate with some integrity, to have rich content with some depth, and to be able to do all of that with world-class standards, and to make a difference to attitudes, to thoughts, to feelings, and to our society around. That's been the effort. In all of that, I just want to say that while initiatives can help, social initiatives, organizational initiatives can help, it all comes down to the individual. To each one of you, I know that there is a School of Broadcast Journalism and Television Production too that you have. To all of you here, the young people here particularly, as well as to the prospective media people, I'd like to close by quoting a poem which was written by somebody born in India, but he wasn't an Indian. But his words have a particular meaning on this occasion. I want to read it out and dedicate it to you all. It's called If. It's by Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired of waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet, don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master,
if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it all on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Thank you. Thank you all very much. And thank you to the Bharat ASMITA Foundation. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और आपकी ही बात